Okay, so welcome to the next session. Now, today we are going to continue with the different things as the different programs we were starting. So, we will be starting with the programs of like an example. So, yesterday we have finished some of the programs and we are going to continue other programs today. So today is very interesting program we are starting is the heading levels. Okay. So basically see I have told you how you are going to write the code here. So here you are going to write initially the document type that is HTML in this case. Now again you know that at start you will write HTML and at end also you will write HTML. So start with HTML document and end with the HTML document. Between the start and end you will have head and then you will have body. So in the head initially you will have titles and that title name is heading levels. Okay. So this you can do with your case anything heading levels in. Now you can say web HTML. Okay, so you can write anything here, so that will appear as a title. Then again, start of the title you will write as it is, and then hyphen, that is backslash title. So this will be ending the title, and after ending the title, you are going to end the head. So this is totally the head part of whatever we are having. After that, you will enter into body, and in the body, you can declare the color of the body. That is here, you have written the BG color. That background color is the pink. Pink has been written here. So whenever I will run this code with HTML, then I will get the whole browser on which the code will run. That will be a pink browser. Then I'm going to see the heading levels. That is H1, H2, H3, H4, H5 and H6. So different heading levels are there. Depending on the heading levels, you are getting the fonts to be reduced. Basically heading level 1 hai, this level 1 is having the largest size. So again you will start with H1 and then end with H1. Okay. Again you will start with H2, you will end with H. You will start with H3, you will end with H. Okay, like that. So this is heading level 1, heading level 2, 3, 4, 5, 6, and then you are ending the body and you are ending the HTML file. Now what we will see that same thing just going to save it as heading levels.html. That file is available here. So this file I will run. So I got this as the output. Now I can change the things like heading level text 1 is the largest size. So text 1 has been given here, heading level, and after that h1 has been considered here only, that is heading level 1 text is the largest size. So this is the heading level text 1 is of largest size. Okay, so this heading level in html, this is the title here. You can see here, here is the title heading level. So not this one, here on the browser you are getting the title heading level in html. If I change this title only heading level, again I will save this and I will refresh this. So here I will get heading level. You just check where cursor has been there, heading level. So okay, so this is the body and I have changed the color to pink. So what I will do, I will just click on red. I will save this file and then again I will refresh this one. So I will get a red color. Then if I want sky blue color, again I will save this and I will just refresh this. So I will get sky blue color. Okay, so this is the way we can have the things. अभी यहाँ पे H1 है, this is the highest heading level and it has been aligned to center. तो इसलिए ये center में दिखाई दे रहा है. Okay. If I can see full this is written as at a center. Okay. So इसको अगर मैं left करता हुआ नहीं, left, just a minute. So left करेंगे, left. So अब ये लेफ्ट अलाइन होने के बाद this text has to be appear left, first one. So I will again, so this text is appear left. Again heading level 2, heading level 2, I also, it has been going to the right, I want to the left, save, refresh, I will get it same. So heading level 1, 2, 3, 4, 5, so ऐसे छोटे छोटे heading होते गए.
So in this way, we will be dealing with the different heading levels. Okay. So H1, H2, H3, H4, H5, H6 and all. So कुछ भी यहाँ पे लिखना है तो you can write the things, you can align and you can have the different heading types. Okay. So this is all about the heading type. Okay. So we go with the next, that is after heading levels we will go for table creation. It is very simple program and very interesting also. So this is about the creation of table. Okay. So in this case again, I'm now you know that how you are going to do the things. That is a doc type is the HTML. Then I will start with HTML. Here I have just given two tabs so that you can get head कहाँ पे है, इस तरह से कर सकते हैं like this. So दोनों हेड के बीच में टाइटल है, टाइटल नेम इज एग्जाम्पल फॉर्म. सो ये मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आता है. Then in body I will be having this structure to be written. This has been written here. The HTML file is created for the table creation and other table properties. The table has 4 rows and 3 columns. So in this way you will be having the body. Now table border you can declare as 1, 2, 3, 4, anything. Then you can give caption to the table. That caption has been shown here and you are going to end the caption. So start and end with the caption. So this is about the declaration of everything related to the table. So what I will do, I will just take out this outside, or what I will do, we will take this only this row. I will paste somewhere. Okay, then I will paste head and body. So end body. 1, 2, 3, 4, 5. So I will give the name to 1, 2, 3, 4, 5.html. This region. So I will try this. So this is just what text has been written. That text is here because I have not declared anything other than only the text. So table one. This is the table one has been written. जब table जितना width होगा उतना ये आ गया है. That I will tell you after this one. So this part has been done. Then TR is the what I can say that your table will be having the first row, which you will declare the different titles in the first row. So that title has been declared between tr and slash tr. So after that, then in one row you will be having th and slash th. Second row th and slash th. Third row th and slash th. Okay. So दो tr के बीच में th है तो you will be getting the table. Now here again, after this tr, you will be having the next row of the table which has been given as d, which is here main row जो है वो th है, उसके बाद वाला सेकंड रो जो है वो td है, td1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद td कीबोर्ड आएगा, उसके बाद td माउस आएगा और ये tr. सो दिस रो हैज बीन ब्रेक्ड हियर. थर्ड रो में आप आएंगे तो अगेन tr से स्टार्ट होगा, अगेन td2, then td minus monitor and then TD to TD, that is printer, and after that TR has been there. And then I'm ending the table. After that I'm just making the breaks of two lines. BR is the break of one line. So I have given BR to break of two lines. Now what I will do afterwards, I will give the table border is equal to 1. देन अनदर एग्जाम्पल विथ मोर इनसाइट्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ से कि और कुछ एग्जाम्पल है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. तो ये है मेरा टेबल 2. तो पहले टेबल 1 का देखेंगे एंड पैरेलली आई विल टेल यू हाउ द टेबल 2 हैज बीन देयर. So table creation I have connected. So here you just observe this one first. So in this case you will be having this HTML file contains this. This has been written here. तो ये जो पूरा टेक्स्ट है ये यहाँ पे. ओके. सो दिस टेक्स्ट हैज बीन रिटन हियर. अब ये टेक्स्ट मैंने हटा दिया. सो इतना ही लिख दिया मैंने सिर्फ. दिस टेबल हैज 3 rows and 4 columns. सेव कर लिया और इसको रिफ्रेश कर लिया. सो आई गॉट ओनली दिस वन. देन टेबल 1 हैज बीन क्रिएटेड विथ ये जो चीज है दैट इज एसआर नंबर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, दैट हैज बीन रिटन हियर.
This is the first row of my table which is specifying whatever the next contents are there. Then for 1 and 2, I will be using td slash td slash td and so on. So table has been completed. Then after that I can declare the border of table. देखो यहाँ पे मैंने one border किया है, so I will just declare it as 4 and see what I can get. So see, this border has been increased to the width 4. If I declare this border as a 4 की जगह 14 कर, save again. So I will get the border to be 14. Okay. So in this way you can declare the border. Then again table caption is there. Another example with more insights. Then you will be having TH, again serial numbers, student name, marks of it. ये इसका मतलब है first row. And then उसके बाद here is the next row you are starting, and then you will be give background color as sky blue for 1, background color as pink for this content, and background color as yellow for this content. So number 1, then number 2 and number 3. So 3 columns are there. Again you are ending the table, you are ending the body, and you are ending HTML. Okay. So in this way you will be getting this one. Now what we will do, we will change this one, that is sky blue. तो यहाँ पे हम कर देते हैं blue, pink है तो yellow, and for yellow we will give take red. Then I will save it and so these all are the changes which happen. So in this way you can create the different tables in whatever you're dealing with. So after table creation, so very interesting is the creation of different forms. Okay, so in this lecture we will just see the different form creation, and then we will stop with this lecture. So these are the different forms. So how the forms are there? Just I will run the program, then you can see how the forms are there. So in this case, in this type of form is there. So इस तरह से मुझे form बनाना है. Initially I have to give title, what I want to do, then title to the form, उसका जो title है. Then I have to enter something. Here I can enter some digits, as I can say. Okay, so this is the way we can. थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ. So in this way the form is. So देखते हैं how the program line by line it will be working. So document type HTML will be having head and head, that is form with some input elements. So ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है. अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा form with input elements, सब निकाल दिया मैंने, इसको सेव कर लिया, and same program I am writing यहाँ, that is form with input elements. Then again I will go in body, then background color has been given sky blue, so I will just write yellow. देखते क्या होता है. So background color will be changed to yellow. Okay. Now use of the form. So use of the form is the heading of the form which has been given. So यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं. Form for basic information of student. So इस तरह से हम इसका इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का ले सकते फॉर्म में. तो अगर इसको मैंने सेव कर दिया और जब मैं इसको रन करता हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग फॉर्म फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट. या फिर फॉर्म निकालते हैं, only we will see basic information. Save is to basic information. Okay. Now मुझे क्या करना है कि I have to enter the name in this form. Let's say I want the name character. So this I want to enter. Okay. So इसलिए इसमें क्या है? This is the label and this is the text box. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो you will be having enter your name in the form. You will be having this label enter your name. Input type is a text type. Text type का मतलब है you can type text in that. Name is n1. You can give any variable and then maximum length is 20. 20 के बाद अगर मुझे लेना है length तो it is not possible. Up to 20 it can give the. Okay, after 20 it is not possible to give the. Then I am going to enter the standard
So either it is 11 or it is 12. So standard, this is just the label. Then after that, input type is a radio. You know that this is called as a radio button. So radio button has been written there. Either 11, this is sub, SUP हमने देखा है, it is superscript. Then दूसरा रेडियो बटन है, तो यहाँ पे है मेरा वैल्यू 12, दैट इज अगेन 12 सब, दैट इज सबस्क्रिप्ट. इसको अगर सब सब्सक्रिप्ट करते हैं हम सपोज, तो देखते हैं जस्ट बेसिकली एसयूवी. यहाँ पे मैंने चेंज किया तो क्या होता है देखते हैं. सो दिस इज गॉन नीचे. तो अभी मुझे क्या चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट चाहिए. इसको सेव करके मैं फिर से देखता हूँ, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट आ है. After that, I am going to again end this sub and superscript, this one. Then I am going to choose the optional subject. Optional subject कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स. चेक बॉक्स का नेम है C1 और उसका वैल्यू है हिंदी. तो यहाँ पे मुझे हिंदी टाइप होके मिलने वाला है, हिंदी. अगेन दूसरा चेक बॉक्स है जिसका टाइप है जर्मन. तीसरा चेक बॉक्स है वो है बायोलॉजी. और चौथा चेक बॉक्स है वो है मेरा IT. Okay, so 1, 2, 3 and 4. And after that, I have to submit this and this information has to go somewhere. So information अगर कहीं पे जाना है तो आपको क्या करना है, you have to go to some server and all. But this is, we are doing everything locally, so information may not be available here. But what you can do is you can write your name, you can choose, you can select the values and then you can submit. Submit होने के बाद somewhere information goes. अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिसअपियर हो गया. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द बेसिक फॉर्म. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट फॉर्म इज देयर. सो इन दिस नेक्स्ट फॉर्म देयर विल बी कंसिडरिंग द फॉर्म नंबर 2. So this is again very interesting form. What I will do, I will just run this and then parallelly we will see how we go. So I have run this. अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन डॉक टाइप HTML हेड. तो हेड आई हैव रिटन फॉर्म विथ सम इनपुट एलिमेंट्स. अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्म इलेक्शंस. I will check this. Yes, I will run this. I will save this. Okay. So फॉर्म एलिमेंट, ये जो टाइटल है फॉर्म एलिमेंट्स, ये इस टाइटल का है. दिस वन इज द टाइटल. ये टाइटल है, यहाँ पे कर्सर है. आफ्टर दैट यू विल बी गिविंग हेड होने के बाद टाइटल. देन अगेन बॉडी बैकग्राउंड कलर इज CN, यहाँ पे दिया है. तो आई विल चेंज दिस टू लेट्स से पिंक. आई विल चेंज दिस लेट्स से पिंक. सी हाउ आई एम डूइंग द थिंग्स. दो कर्सर के बीच में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है पिंक और वो जो टेक्स्ट अपीयर होने वाला है उसका कलर है रेड. सो पिंक एंड रेड आई एम गेटिंग नाउ. तो इसको मैंने सेव कर लिया. इसको सेव कर लिया और इसी को मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर. यू कैन सी, इसमें अगर देखता हूँ तो ये यहीं पे रन कर रहा हूँ. सो दिस इज एंड दिस इज, सो टू डिफरेंट बैकग्राउंड का कलर अलग, इसका कलर अलग. ओके. सो अगेन आई विल राइट स्काई ब्लू हियर. That is more appropriate for this case. Sky blue. Then I will just take hat, so it will be running. Okay. So background color is sky blue and text color is red. After that, what head is to be written given to the form is use of form elements. Okay. So just I can again I will just try to change it. Just I have written the form elements. Okay. Again I will save this and I will just again changes. So I got form elements. Okay. अभी इसमें मुझे नाम एंटर करना है, तो इसमें आएगा टेक्स्ट बॉक्स. सो एंटर योर नेम. देन ये है टेक्स्ट. यहाँ पे FN बेसिकली नेम गिवन टू इट. उसका BR क्यों दिया है, BR इज द ब्रेक ऑफ द लाइन. अगर इसको हटा दिया तो क्या होता है, देख ब्रेक हटा दिया हमने, यहाँ पे CCT आ गया. इसको भी हटा दिया इस ब्रेक. अगेन आई विल चेक. सो यहाँ पे मेरा फॉर्म बना. ओके. बट दिस विल नॉट लुक गुड, इसलिए हम क्या करेंगे, नेम एंटर होने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगा BR डालने के बाद देखेंगे उसका इफेक्ट. ये आएगा नीचे
उसके बाद यही बी आर जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा, सिलेक्ट योर सिटी, नीचे आ गया। उसके बाद बी आर हैज बीन रिटन हियर, देन enter your address. Okay, so this is very simple. So 1, 2, 3, and then I can have send. अभी send के लिए भी अगर मैंने और दो लाइंस बना लिए यहाँ पे, एक भी है और दूसरा send, ये send नीचे. Okay, so one line break it is taken. So initially I will be having the text as input type. उसके बाद सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो सिटी इज द बटन, दैट इज सिलेक्ट नेम इज सिटी. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है मेरा पुणे, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है अहमदाबाद. ओके, सो ऑप्शन 1 ऑप्शन एंड ऑप्शन, ऑप्शन बैकस्लैश ऑप्शन, ऑप्शन बैकस्लैश ऑप्शन, देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द एंड. तो ये जो पूरा है दिस इज फॉर दिस वन, 1 2 3 इसके लिए पूरा है दिस वन, सिलेक्ट पुणे हैदराबाद अहमदाबाद. उसके बाद एक यहाँ पे और एक मैं करता हूँ, सो इट विल लुक वेरी नाइस. इसमें और कुछ नीचे आया, इसको भी नीचे करेंगे. राइट, अगेन 2 ब्रेक्स आई विल इंसर्ट हियर. सो यहाँ पे भी थोड़ा सा. ओके, नाउ इट इज लुकिंग वेरी नाइस. सो ये 3 सिटीज आ गए, तो ये ऑप्शन है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स आया. उसके बाद एड्रेस के लिए फिर से आई विल बी गेटिंग टेक्स्ट एरिया, एंटर योर एड्रेस, टेक्स्ट एरिया, नेम है एड्रेस. जिस टेक्स्ट एरिया में 3 रो है और 30 कॉलम्स है, सो यू कैन राइट लाइक दिस, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, देन 4 5 6. तो एक बार आपको 3 रो एक बार दिखाई देगा. अगर इसमें आप 2 ही रो करते हैं और सेव करते हैं तो देखते क्या होता है. यू कैन राइट 1 2 एट अ टाइम, देन यू हैव टू गो नीचे. उसके बाद एक ही करते हैं तो क्या होगा देखते हैं. So I can write only one. Then I have to go to the next. Okay. So this is the way we can have things. Then placeholder is your address and the required your address which is required for. Okay. So ये जो पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, दिस इज फॉर एड्रेस, जिसमें आपने क्या लिया है टेक्स्ट एरिया. इसमें क्या लिया था आपने टेक्स्ट लिया, तो इसमें है टेक्स्ट एरिया. जिस एरिया का नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया, यहाँ पे आप दे सकते हैं एड्रेस एनीथिंग, लेकिन इसमें यू कैन डिफाइन योर एरिया दैट 330. ओके, आफ्टर दैट 3 ब्रेक्स दिए हैं और उसके बाद मैंने सबमिट बटन दिया है. सबमिट बटन को नाम दिया है सेट एंड मेरा फॉर्म एंड हो गया, बॉडी एंड HTML. ओके, सो अगेन आई विल run still this and run this. So I got this one. So I can enter my name, Dr. Jean Nita. I'm from Hyderabad. My address is Hyderabad. Okay, and then I can send the information. So as the information needs to be sent remotely to any of the folder, so इसलिए यहाँ पे जो information है this is not connected to the browser, इसलिए ये information यहाँ पे connect नहीं है. Okay, again what I will do, I will run and I will try to do the next running of the form declaration. So this form is available. Okay, so with this we will end up the today's session, and in the next session we will see a very interesting part that we will scripting. JavaScript we are going to see, and in the JavaScript how you can add the different values and different things in the JavaScript that we are going to see, and we are going to integrate the JavaScript along with the web designing page that is HTML. So HTML और Java का communication next इसमें देखेंगे. Okay, so thank you very much.